નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે સંધ્યા. કોરોનાથી મોતનો સિલસિલો નથી અટકી રહ્યો. મહામારીના આ સમયમાં દરેક વ્યક્તિ ડરમાં છે, ગભરાયેલો છે. દરેકના મનમાં સવાલ છે કે આખરે આ આફતથી કેવી રીતે બચીએ, કેવી રીતે કોરોનાની ઝપેટમાં આવીને પણ સુરક્ષિત રહીએ. લોકો વિચારે છે કે વાયરસની ઝપેટમાં આવી જઈએ તો ખુદને સ્વસ્થ રાખવા માટે અને પોતાની સ્થિતિ ગંભીર થતી અટકાવવા માટે શું કરી શકાય. અમે મહામારીના આ સમયમાં કોરોના અને તેના ખતરાથી બચાવ માટે સૌથી જરૂરી જાણકારી ખૂબ જ સરળ ભાષામાં તમને સમજાવીશું. દેશના ટોચના મેડિકલ એક્સપર્ટના માધ્યમથી અમે તમને બતાવીશું કે ઓક્સીમીટરથી લઈ ઓક્સિજન સિલિન્ડર સુધી અને ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટરથી લઈ અને વેન્ટિલેટર સુધી કોને કેવી સ્થિતિમાં કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડે છે. કોરોનાની સારવારમાં ઉપયોગી મેડિકલ ઉપકરણોના ફાયદા અને તેની સાથે જોડાયેલી દરેક જરૂરી વાતો તમને બતાવીએ અમારા સ્પેશિયલ રિપોર્ટ જીવન રક્ષક ક્લાસમાં. દેશની હોસ્પિટલોમાંથી ડરાવનારી તસવીરો સામે આવી રહી છે. શહેર શહેર દવાઓની દુકાન પર ભીડ લાગી છે. કોઈ જરૂરી દવાઓ શોધી રહ્યું છે તો કોઈ કોરોના દર્દીઓને કામ આવનાર મશીનો. દેશમાં ઓક્સીમીટર, ઓક્સિજન સિલિન્ડરથી લઈ વેન્ટિલેટર જેવા શબ્દો દરેકના મોઢે સાંભળવા મળી રહ્યા છે. एक्चुअली मैं बहुत परेशान हूँ. इस टाइम पे ऑक्सीजन पहले से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलते हैं, फिर सिलेंडरों की इतनी ज़्यादा पैसे मांगे जाते हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. लूटा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है. कितने देर का वेटिंग है? कल रात से आप लोग? कल रात से सर. आप लोग अस्पताल से हैं? आप लोग अपने पेशेंट के लिए कि अस्पताल से? अपने पेशेंट के. કોરોનાનું જ્ઞાન જે તમારો જીવ બચાવશે. આજે અમે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ કોરોના દર્દીઓના ઉપયોગમાં આવતા ખાસ ઉપકરણ અને તેને ઉપયોગમાં લેવાની સરળ રીતો. દેશના જાણીતા ડોક્ટરો કોરોના દર્દીઓ માટે સૌથી જરૂરી બતાવવામાં આવ્યું છે ઓક્સીમીટર. જો કોઈ કોરોનાના દર્દીની તબિયત ખરાબ થાય તો તેની માટે ઓક્સિજન સિલિન્ડરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે, જે આજકાલ દુર્લભ થઈ ગયું છે. માટે હવે લોકો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટરનો, જેથી દર્દીઓને ઓક્સિજન આપી શકાય. દેશમાં બેડની અછત છે અને ખાસ કરીને વેન્ટિલેટર બેડની. તો વેન્ટિલેટર શું છે અને ડોક્ટરો તેની મદદથી કેવી રીતે દર્દીઓની સારવાર કરે છે? કોરોના દર્દીઓની સાર સંભાળ અને તેના માટે ઉપયોગી આ ઉપકરણો અંગે કેટલાક ડોક્ટર સરળ ભાષામાં સમજાવવા જઈ રહ્યા છે. કોરોના દર્દીઓને ડોક્ટર પોતાના લોહીમાં ઓક્સિજનનું સ્તર વારંવાર ચેક કરવાની સલાહ આપે છે. તે માટે વારંવાર એક મશીનનું નામ લેવામાં આવે છે અને તે છે ઓક્સીમીટર. આ ઓક્સીમીટર આખરે છે શું? આ અંગેની માહિતી આપી રહ્યા છે સાયન હોસ્પિટલ મુંબઈમાં एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट हेड अनिला मालदेव. देखो, ऑक्सीमीटर जो है वो अपने बॉडी के टिश्यूज में, यानी कि अभी आप उंगली डालोगे तो उंगली में यहाँ कितना ऑक्सीजन का प्रमाण है वो मेजर करता है. अभी नॉर्मल एक आदमी है तो उसके सैचुरेशन जो है, यानी कि हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन परसेंटेज भरा है, तो नॉर्मली 100% सेचुरेशन होना चाहिए, 100% ये होना चाहिए. ઓક્સીમીટરનો શું છે ઉપયોગ? કોરોનાની ફેફસા પર ખરાબ અસર પડે છે અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે તો આપણા શરીરમાં ઓક્સિજનનું લેવલ ઘટી જાય છે. આ નાનું મશીન ખૂબ કામનું છે, કેમ કે તે સમય રહેતા બતાવી દે છે કે આપણે ક્યારે ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવાનો છે. સરળ ભાષામાં હવે સમજીએ આ કામ કેવી રીતે કરે છે. देखिए, छोटी सी डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर. बहुत काम की डिवाइस है और कोरोना के पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक है. जिनको कोरोना है अपने घर में छोटी सी डिवाइस को रखें, बड़े आसानी से केमिस्ट को मिल जाता है. ये आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि आप ज़्यादा बीमार तो नहीं है. अगर आपका लेवल इस मशीन के अंदर 93 या उसके कम आता है तो आपको तुरंत अस्पताल जाना है या डॉक्टर संपर्क करना है. मैं आपको बताता हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं. छोटी सी मशीन है, इसको ऐसे खोलेंगे, अपने फिंगर को डालेंगे और यहाँ से इसको बटन दबा के ऑन कर देंगे. अब देखिए इसमें 2 फिगर आ रही हैं. ऊपर वाला आपको जो दिखा रहा है वो
ऑक्सीजन लेवल दिखाएगा। ये देखिए मेरा 99 आ रहा है, जिसका मतलब मैं परफेक्टली ठीक हूँ। नीचे मेरा हार्ट रेट 68 आ रहा है। तो आपको इसको इस्तेमाल करना, अगर ये लेवल ऊपर वाला आपका 93 या इसके नीचे आता है, इसका मतलब आपकी तबीयत बिगड़ रही है और आपको अस्पताल में या डॉक्टर को संपर्क करना है। कोई भी फिंगर यूज कर सकते हैं? हाँ, इसमें कोई भी फिंगर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता बहुत सिग्निफिकेंट, पर ये बहुत ही यूजफुल डिवाइस है, आपके घर में जरूर होनी चाहिए। और इसको सर लगाने का तरीका यही है, उंगली ऐसे रखनी है? हाँ, बस ऐसे करके, कोई मुश्किल काम नहीं, आप किसी भी फिंगर में लगा लें, ये सैचुरेशन लेवल दिखा देगा। ये थोड़ा बहुत 1-8 डिग्री का वेरिएशन हो सकता है, पर अदरवाइज बहुत एक्यूरेट होता है ये, और ये प्रैक्टिकली लाइफ सेविंग है कोरोना के टाइम में। જેમ કે દિલ્હી મેડિકલ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ ગુપ્તાએ કહ્યું કે ઓક્સીમીટર જો લોહીમાં ઓક્સિજનનું સ્તર 93 કરતા ઓછું હોય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. ડોક્ટરની સલાહ પર જ કોરોનાના દર્દીઓને અત્યારે ઘરે ઓક્સિજન આપવામાં આવી રહ્યો છે. अभी जबकि प्रमाण 96 से कम हो जाता है, 92, 90 होता है, तो एक डेंजर सिग्नल यानी एक वार्निंग मिलता है कि नहीं, इसका ऑक्सीजन कम हो रहा है, अभी कुछ उसको एक्शन लेनी चाहिए, उसको ऑक्सीजन देना चाहिए. फिर सपोज कोई मरीज का सैचुरेशन हमेशा 94 रहता है, उसको हम 6 मिनट चलने को बोलेंगे और 6 मिनट चलने के बाद उसका फिर से हम लोग फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन मेजर करते हैं और वो काफी कम हो गया है. इनिशियल 94 था और बाद में वो आ गया 88, तो यानी कि मीन्स 3-4% से वो कम हो गया, यानी कि ये आदमी भी अभी बॉर्डर लाइन स्टेज में है, उसको भी हमको ऑक्सीजन देना जरूरी हो जाता है. ઓક્સિજન સિલિન્ડરનું શું કામ? જે દર્દીઓના લોહીમાં ઓક્સિજન ઓછો છે તેમને ઓક્સિજન આપવા ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે ઓક્સિજન સિલિન્ડરનો. આ સિલિન્ડર મેળવવા માટે લાંબી લાંબી લાઈનો લાગે છે. લોકો પોતાની રીતે ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે અને ઘરે જ ઓક્સિજન આપી રહ્યા છે. પણ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરવામાં ખૂબ સાવધાની રાખવી પડે છે. સિલિન્ડરની અંદર ઓક્સિજન હાઈ પ્રેશરમાં હોય છે, માટે સિલિન્ડરને ગરમ વસ્તુ અને આગથી દૂર રાખવું જોઈએ. જે રૂમમાં દર્દીને ઓક્સિજન સિલિન્ડરથી ઓક્સિજન આપવામાં આવી રહ્યો હોય ત્યાં આગ ન પ્રગટાવવી જોઈએ. ધૂપ કે અગરબત્તી પણ ન પ્રગટાવવી જોઈએ. સાથે ધ્યાન રાખો કે દર્દીને તેટલો જ ઓક્સિજન આપો જેટલો ડોક્ટરે કહ્યું હોય. દર્દીને વધુ ઓક્સિજનની જરૂર હોય ત્યારે જ સિલિન્ડર જરૂરી હોય છે. डिपेंडेंट नहीं है, पर इसकी लिमिटेशन ये है इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, एक बहुत ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करता ऑक्सीजन. अगर 5 लीटर या कुछ मशीनें 10 लीटर तक देती हैं, पर आपको किसी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए 15, 20, 50 लीटर, तो फिर आप कॉन्सेंट्रेटर नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करने पड़ते हैं. ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર શું છે? ડોક્ટરે કહ્યું તેમ જે દર્દીને વધુ ઓક્સિજનની જરૂર હોય છે તેના માટે જ સિલિન્ડરની જરૂર હોય છે. બધાને તેની જરૂર નથી હોતી. તો પછી જેને ઓછા ઓક્સિજનની જરૂર છે તેમના માટે શું કરી શકાય? આજકાલ તમને આ નવો શબ્દ સાંભળવા મળી રહ્યો છે અને તે છે ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર. આ વળી શું છે? ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो क्या करता है कि हवा में से अपनी एयर खींचता है. एयर यानी क्या होता है? नाइट्रोजन. अपने को बेसिक सबको पता है, स्कूल में भी सिखाया जाता है. ऑलमोस्ट करीब करीब 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और बाकी के 1% में बाकी के जो भी है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और ट्रेस गैसेस रहते हैं. तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो एक टेक्नोलॉजी होती है, उसमें एक सीव होती है जियोलाइट की, और वो क्या कर लेता है कि वो नाइट्रोजन जो है वो खींच लेता है अपनी सीव में. ओके, नाइट्रोजन खींच लेगा तो रहा क्या? ऑक्सीजन. तो वो ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करके अपने को दे पाता है. ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उतने प्रेशर से ऑक्सीजन नहीं फेंकता, तो हम जनरली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन लोग को देते हैं जो हमारे अस्पताल से डिस्चार्ज होके जाते हैं, जिनको कोविड बीमारी ख़त्म हो गई होती है. उसके बाद 1-2 लीटर का ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, जिससे वो घर पे 1-2 लीटर पे रहें और उनका ऑक्सीजन उस पर ऑक्सीजन ठीक आ जाता है शरीर में. ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर इसको बीमारी के स्टार्टिंग में ઓક્સીમીટર, ઓક્સિજન
કોન્સન્ટ્રેટરની સાથે જ સૌથી ચર્ચાતો શબ્દ છે વેન્ટિલેટર. વેન્ટિલેટર એટલે કે લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ. જ્યારથી દેશમાં દર્દીઓની સંખ્યા વધવાની શરૂઆત થઈ છે ત્યારથી વેન્ટિલેટરનું ઉત્પાદન વધારવા સહિતના કામ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે. કોરોના વાયરસમાં જે ગંભીર દર્દી હોય તેમને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવે છે. તેવામાં સવાલ જરૂર થતો હોય છે કે વેન્ટિલેટર શું છે, તેનાથી દર્દીનો જીવ કેવી રીતે બચાવી શકાય. જ્યારે કોઈ દર્દીની સ્થિતિ ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટરથી પણ નથી સુધરતી, પછી જરૂર પડે છે હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવવાની. સારવારમાં સૌથી ગંભીર તબક્કો હોય છે વેન્ટિલેટર. વેન્ટિલેટર એટલે લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ. મેડિકલ સાયન્સનો આ ચમત્કાર છે જે માણસનો જીવ જતો અટકાવી શકે છે. કોરોના વાયરસથી બચવા માટે વેન્ટિલેટર લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. કોરોના વાયરસના કારણે ફેફસા પર અસર થાય છે, જેના કારણે દર્દીને શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થાય છે. પરંતુ વેન્ટિલેટર શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયાને મેનેજ કરે છે. આ સમય દરમિયાન ડોક્ટરને ચેપ દૂર કરવા અને સારવાર કરવા માટે સમય મળી જાય છે. ये टाइप के जो मशीन होते हैं फुल फ्लेज्ड उसको वेंटिलेटर बोलते हैं. तो ये जो फुल फ्लेज्ड वेंटिलेटर है वो कनेक्ट हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट पूरा सपोर्ट देते हैं. जब तक फुफ्से गंभीर परिस्थिति में से बाहर न आए तब तक वो मशीन उसको सपोर्ट देता रहता है. समझे आप? तो इसमें क्या है, इसमें भी ये जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो काफी सोफिस्टिकेटेड होते हैं. उसमें पेशेंट को जितना सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट हम एडजस्ट कर सकते हैं. तो वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो प्रेशर से हवा फेंकती है. एक टाइम आता है कोविड की बीमारी में जब ऑक्सीजन से काम नहीं चलता, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और जो सांस लेने की जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती है. तो उसमें ऑक्सीजन तो देनी पड़ती है बट उसके साथ साथ प्रेशर भी लगाना पड़ता है जिससे वो ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंच जाए अच्छे से. तो इस टाइम हमें वेंटिलेटर काम आता है और वेंटिलेटर लगाना पड़ता है. जब ऑक्सीजन से काम नहीं चलता तो हम वेंटिलेटर लगाते हैं जो फेफड़ों को खोल देते हैं और उसमें ऑक्सीजन का एक्सचेंज आराम से अच्छी तरह हो पाता है. જો સરળ ભાષામાં સમજીએ તો જ્યારે કોઈ દર્દીના શ્વસન તંત્રમાં એટલી તાકાત નથી હોતી કે તે પોતે શ્વાસ લઈ શકે તો વેન્ટિલેટરની આવશ્યકતા પડે છે. સામાન્ય રીતે વેન્ટિલેટર બે પ્રકારના હોય છે. પ્રથમ મિકેનિકલ વેન્ટિલેટર અને બીજું નોન ઇન્વેસિવ વેન્ટિલેટર. હોસ્પિટલમાં આપણે જે વેન્ટિલેટર આઈસીયુમાં જોઈએ છે તે સામાન્ય રીતે મિકેનિકલ વેન્ટિલેટર હોય છે. દર્દીની સ્થિતિ અનુસાર તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. देखिए, जब कोरोना के पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और नॉर्मल तरीके से ऑक्सीजन देने से बात नहीं बनती तो कई बार हमें मैकेनिकल वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. मैकेनिकल वेंटिलेटर्स एक तरह की मशीनें होती हैं जो सांस लेने में हेल्प करते हैं और शरीर में ऑक्सीजन जाने में हेल्प करते हैं. मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि वेंटिलेटर क्या होता है और कैसे काम करते हैं. देखिए, ज़्यादातर मरीजों को तो माइल्ड ऑक्सीजन से काम बन जाता है. बहुत कुछ लोगों को वहां तक पहुंचते हैं जहाँ की वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है. और वेंटिलेटर बेसिकली क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा से के थ्रू ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचती है और फेफड़ों में पहुंच करके वो हमारे फेफड़ों के थ्रू हमारी ब्लड वेसल्स में जाती है जहां से ऑक्सीजन पूरे शरीर के हिस्सों में पहुंचती है जहां ये पहुंचनी चाहिए. जैसे हमारे फेफड़े हैं, ये ऊपर से ट्रेकिया जिसके थ्रू हवा आती है. तो आप एटमॉस्फेयर से ब्रीथ करेंगे तो ट्रेकिया के थ्रू ये दोनों लंग्स में हवा पहुंचेगी और लंग्स में जाने के बाद छोटे छोटे वेसल्स होती हैं, छोटी एल्वोलाइज होती हैं. ये देखिए वेसल्स हैं, ये देखिए किस तरह से हवा अंदर जा रही है और हवा जा करके ये दोनों ये पतले पतले पाइप्स होते हैं जिनको हम ट्रेकिया और ब्रोंकियोल्स कहते हैं. इसके थ्रू आखिरी में जा करके इस तरह के पतली पतली ट्यूब्स बन जाती हैं. इनको एल्वुलर सैक कहते हैं. इसमें आपको देख रहे हैं नसें हैं दो तरह की. एक तो होता है जो प्योर ब्लड होता है जिसमें आर्टरीज कहते हैं, वो कैरी करता है, और एक ही होता है तो जो आप इनहेल कर रहे हैं इसमें ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू लंग्स में वापस आएगी. और जब आप सांस को वापस छोड़ेंगे तो वो हवा जिसमें ऑक्सीजन कम है पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा वो बाहर चली गई. ये सर्कल चलता रहता है बार बार. ये ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. ऐसे हम ब्रीथ करते हैं. पर कोरोना के पेशेंट में क्या होता है, आखिरी में ये देखिए
ये फ्लूइड भर जाता है जाकर के, जहाँ पे हवा एक्सचेंज होनी चाहिए। अब इसके फ्लूइड भरने से ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाती और कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं पाती, तो आप कहते हैं कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। और वेंटिलेटर कैसे काम करते हैं? वेंटिलेटर एक तरह की मशीन होती है, देखिए मशीन है, हमने पेशेंट को अटैच कर दिया। वेंटिलेटर के थ्रू ये आखिरी में जाके, या कई बार आप मैकेनिकली हाथ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं दबा करके, पर ये मशीन वाला वेंटिलेटर है। इसके थ्रू ये ऑक्सीजन वाली एयर गई और पेशेंट के अंदर गई, पेशेंट ने ब्रीथ किया और कार्बन डाइऑक्साइड वाली बाहर आ गई। पहले ये वेंटिलेटर से निकल के एक छोटी ट्यूब होती है जो हम पेशेंट के गले में डालते हैं, उसके थ्रू लंग्स में जाती है। और ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं कि पहले निकल के ह्यूमिडिफाई किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है ताकि वो टेम्परेचर में पहुंचे। पर आप मेन बात समझने की है कि वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो आपके, अगर आपको सांस की दिक्कत है और आपके ऑक्सीजन की लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो मशीन के द्वारा प्रेशर से आपको ऑक्सीजन पहुंचाएंगे और जाकर के आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करेगा। ગંભીર કોરોનાના દર્દીઓ માટે વેન્ટિલેટરનો ઉપયોગ થાય છે, જો કે સૌથી કારગર અને અસરકારક ઉપાય એક જ છે કે જો વધુ પ્રમાણમાં લોકો આ ઇન્ફેક્શનથી બચી શકશે તો હોસ્પિટલ ઉપર દબાણ ઊભું નહીં થાય। આ માટે WHO અને સરકારે આપેલી ગાઈડલાઇન્સ, લોકડાઉન, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ વગેરેનો કડક અમલ કરવામાં આવે। સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ। રજા આપશો, નમસ્કાર।